And the big question is about what's happening within the India alliance. Mamata has in fact made her stance clear. She is saying that she is ready to go ahead and lead the India alliance. After Maharashtra's debacle, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has expressed a dissatisfaction with the functioning of the opposition India bloc and said that she is ready to lead the India bloc. In an interview to a Bangla news channel, the Trinamool Congress supremo said that she was one of the founder members of the India Bloc and if given the opportunity, she would run the show. She said, and I quote, "I had formed the India Bloc, now it is up to those leading the front to manage it. If they can't run the show, what can I do? I should just say that everyone needs to be taken along. I don't want to go outside Bengal, but I can run it from here." On being asked why she is not taking charge of the India Bloc given her credentials as a strong anti-BJP force, Banerjee said that if given the opportunity, I would ensure its smooth functioning. In the winter session of Parliament, major differences emerged among the India Bloc members over the functioning of the opposition bloc. MPs of the Trinamool Congress and Samajwadi Party also skipped the joint opposition protest over the Gautam Adani bribery case. Trinamool and Samajwadi Party are reportedly not on the same page as the Congress in raising the Adani bribery issue. While the Trinamool wants a discussion on issues like inflation, unemployment and deprivation of funds to the opposition states, the Samajwadi Party leaders want the Sambal violence to be taken up. Let's take a look at some of the reactions coming to Mamata's statement. भानुमति के कुनबे में सत्ता संघर्ष चल रहा, कभी सपा, कभी डीएमके, कभी शिवसेना और अब टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस संघर्ष में शामिल हैं और सभी अपना अपना राग अलाप रहे हैं। अगर एक विवेकहीन नेता राहुल गांधी के भार से पूरी तरह कांग्रेस और गठबंधन दब चुका, अब केवल व केवल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक लाइबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं और इंडी गठबंधन युवराज व युवरानियों को की पॉलिटिकल प्लेसमेंट, उनकी भ्रष्टाचार लूट खसूट की कुनबे को बचाने का एक गठबंधन है जो आज सत्ता संघर्ष में पूरी तरह डूब चुका है। जब टीएमसी की जीत हुई तो टीएमसी ने पूरे देश में अपना नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, बंगाल और वहाँ गोवा में भी हर जगह हाथ पांव मारा। टीएमसी कहाँ तक सफल हुई इसी से समझ सकते हैं। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक का स्तर पर क्या लड़ेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे। पहले एक और राज्य में जाकर के विस्तार तो कर सके। ममता जी पर मैं कोई पर्सनली टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक यूनाइटेड फ्रंट है, ये सबकी सहमति का फ्रंट है, किसी एक की सहमति का फ्रंट है। तो किसी एक के ऊपर लांछन लगाना तो ठीक बात नहीं है ना। अब कांग्रेस पे लगाइए या मैं किसी और पे लगा दूं, तो कांग्रेस की तरफ से तो इस तरह की बयानबाजी आती नहीं है। और लोग करें, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इंडिया ब्लॉक और इंडिया ब्लॉक के साथ पूरा देश, क्योंकि इंडिया ब्लॉक किसी आइडियाज़ की बुनियाद पर है, व्यक्ति की बुनियाद पर नहीं है, आइडियाज़ की बुनियाद पर है। और माननीय खड़गे जी इंडिया गठबंधन के भी मजबूत चेयरमैन के तौर पे हैं और खूब अच्छी तरह एक दलित आवाज़ है, एक मजबूत आवाज़ है, पार्लियामेंट के अंदर लीड करते हैं। इंडिया ब्लॉक की आवाज़ कहिए, कांग्रेस पार्टी की आवाज़, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बहुत मजबूती के साथ देश की जनता का आवाज़ उठाते रहते हैं। ये सब तो फैक्ट्स हम लोग के सामने हैं। अलायंस में झगड़ा शुरू हो चुका है नेतृत्व को लेकर। हमने देखा है टीएमसी के नेता ने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी को एलओपी बदलकर टीएमसी के नेत्री को, ममता बनर्जी को एलओपी बनाना चाहिए, जिस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई मनिकम टगोर की। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया प्रोटेस्ट पर पार्लियामेंट में। हमने देखा है जेएमएम हो, उमर अब्दुल्ला हो, चाहे उद्धव सेना हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज हो, सबने कांग्रेस के खिलाफ कुछ न कुछ कहा है या कांग्रेस को बताया है कि असलियत में उनकी स्थिति और हकीकत क्या है। और अब टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी बोलती है कि मैंने इंडिया अलायंस तो बना लिया, पर मैं क्या कर सकती हूँ अगर नेतृत्व देने के लिए असक्षम है ये लोग। ये सबको साथ में लेकर नहीं चल पाते। मैं नेतृत्व दूंगी तो सबको साथ ले चलूंगी। मतलब कि ये लड़ाई
अब मिशन विशन की नहीं, केवल एम्बिशन और पोजीशन की है, ये तो साफ है। देखिए, कौन इंडिया ब्लॉक को लीड करेगा, कौन चलाएगा, इसका फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा। इसका फैसला इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दल के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा होगा। और शीर्ष नेतृत्व तमाम घटक दल के जब बैठेंगे, जब उनसे बातें होगी, मंथन होगी, तो उसका सार निकलेगा। बयानबाजी से कोई ब्लॉक नहीं चला सकता इंडिया ब्लॉक। और स्वाभाविक तौर पे लोगों का भरोसा और विश्वास कांग्रेस के ऊपर दिखा रहा, और इसी का फलाफल है कि कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक को संचालित करने का काम किया। और हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इंडिया ब्लॉक को चलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा में हो या अन्य राज्यों में हो। पूरी तरह मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को लेकर के आगे बढ़ रही है। अब किसी को अगर महत्वाकांक्षा है तो स्वाभाविक तौर पे महत्वाकांक्षा होना भी चाहिए, लेकिन इसका फैसला इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हमारे घटक दल के लोग हैं वो करेंगे। The cracks in India alliance was already visible during Haryana elections, in Maharashtra elections. Now we are able to see the cracks in West Bengal also. So Sri Mamata Banerjee has already stated that it is the present leadership of India alliance, they can't lead the alliance. So therefore she wants the leadership of the India alliance and lead the India alliance from Bengal. In India alliance, every leader is a selfish leader, as we have maintained earlier. Every leader wants their domination, their family's domination, and their priority to the country's issues and the national issues are very least. So the cracks in the India alliance are definitely is a sign of breaking of India alliance, and definitely this India alliance will break, because after the Maharashtra elections they are sure that the Congress can't lead the India alliance anymore, and Congress itself has been weakened in the country. देखिए, आज ये साबित हो चुका है कि इंडिया अलायंस का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व व प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखता है। इंडिया अलायंस का पूरा नेता का पूरा जो गठबंधन है वो ये समझता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये सब के सब लोग इंडिया अलायंस में जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ना जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब के सब लोग एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को काटने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। इसीलिए हम राहुल गांधी को बालक बुद्धि नहीं कहते, इंडिया अलायंस ही राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहता है। Well, we are in fact joined in by Yash, who comes with some more insights about this rebellion. Yash, I won't call it rebellion though, it's too big of a word, but the fact remains is that unhappiness is in fact quite there within the India bloc, and probably Mamata is echoing sentiments of the other leaders associated with the bloc as well, because you know, the parliament session, they had a different kind of an approach. The Congress went completely alone. Is Congress still that umbrella party that can hold things together within the India bloc? Because it clearly looks like Mamata is saying that nothing is happening on the ground. Well, Congress being the umbrella party is going to be a very big question for the entire I.N.D.I.A bloc. Looking at the results, in fact, if you look at the Maharashtra results also, Congress has done its worst. If you look at Maharashtra as in the assembly polls. In fact, if you go to Jharkhand as well, the I.N.D.I.A bloc fought together, but Congress came out as the junior alliance partner, where JMM clinched most of the seats. So a lot of questions are being raised on the leadership of the Congress party, and in particular
of Rahul Gandhi. Can Rahul Gandhi be the beacon of light for the I.N.D.I.A bloc in the upcoming elections, be it the assembly polls or be it the upcoming Lok Sabha polls? But one thing is for sure that, like you rightly mentioned, that yes, definitely there is some sort of unhappiness prevailing within the I.N.D.I.A bloc, and this is something which has been raised by multiple leaders in the past as well, be it the TMC, be it DMK, or be it the Samajwadi Party. In fact, a lot of voices have come in within these parties as well in the past. But at this point, what we are looking at, Mamata Banerjee being one of the most confident faces, because coming out and speaking like this amidst the parliament session, Mamata Banerjee very well knows that the parliament session is on, and a statement like this could actually hamper a lot of things within the parliament, and in fact the larger game of perspective over here could also be tempered. But nonetheless, Mamata Banerjee projecting herself as one of the foremost runners for this very position. Perhaps we cannot call it the position, but something I.N.D.I.A bloc really needs is a leader who can actually bring all the parties together on the table, because we know the kind of formation I.N.D.I.A bloc has, from the right parties to the left parties, all under single umbrella. Well, the Congress says that why we should be the umbrella party. They have always lamented that we are one of those parties who has actually kept alliance running in the past as well, and we have a lot of experience. But Mamata Banerjee is one of those leaders who has a lot of experience, administrative experience, fighting elections. In fact, in the by-polls also in West Bengal, there was a stellar performance which was put up by the TMC after all those incidents like Sandesh Khali. But still, it remains to be a big question mark as to how Congress, and in fact the top brass of the Congress, is going to react on this very statement of Mamata Banerjee. Well, interestingly enough, also, Yash, the big question over here is that she said that she would run the alliance, and she said she doesn't want to leave Bengal. So she's not talking about a national ambition, but she's talking about having the reins of the alliance with her. So you're looking at, the chairman of the India bloc at the moment is Kharge, and probably being at the helm of that to run it from Bengal, there are other questions that could be in fact raised as to why she still is not ready to leave the turf in Bengal and move towards a national position. Because here, she's made that clear. She said that she doesn't want to leave Bengal, but she wants to run the alliance from Bengal, and that is one thing that is out there. So if no national ambitions, why take up the India bloc reins from Bengal only? Well, probably this is one of the hints which Mamata Banerjee is actually giving out, that she has not taken any names perhaps, but it was a direct attack on the leadership of the Congress at this very juncture, and she has made it very clear that she doesn't want to move out of Bengal, because she knows the kind of fort she holds in West Bengal for the TMC and for the entire I.N.D.I.A bloc. But one very interesting thing here is that a lot of regional parties in I.N.D.I.A bloc had reservations about Congress being the umbrella force in the I.N.D.I.A bloc, looking at their performance post 2014, either be it the assembly polls or the national polls. But at this point, what we are looking at is a stormy days ahead for the I.N.D.I.A bloc. And in fact, I can tell you that looking at the history of the I.N.D.I.A bloc, when one voice is being raised by one party, there are other dissent voices which also comes up. So Right. this is very much a developing story, and perhaps in the coming days or in coming hours, we could perhaps see more voices, more dissent voices coming in from the I.N.D.I.A bloc.